family as it is a uh, as I am living. After me, there should be no dispute in my family. There is no uh, destroy of reputation in society. That we can do through the succession planning. So today we are going to have the discussion on the succession planning and will. If you have any question, you can write down on your diary, notepad, or anything. And after end of session, we will have the your question answer. Whether it will be the 5 minutes question answer session or it is the half an hour question session, there is no issue. But your all question will be answered. Yeah, yeah. So first of all, we have to know what is the meaning of will. So will is a legal declaration a person makes about the way they want their property managed or distributed after their death. मतलब मेरे जाने के बाद या मिस्टर एक्स के जाने के बाद whatever I have property, that will be the managed or distributed with whom, whether it can be distributed with my son, whether it can be distributed with my mother, whether it can be distributed by with my wife, whether it can be distributed with my friends or any charitable trust or anywhere, or it can be combination of anyone. So it is a legal declaration where everyone is the bound and no one can claim a challenge. Sometime we have heard a will has been challenged. Okay, will can be challenged, but it is a legal declaration by the deceased person where it can be challenged if it is not fulfilling the criteria of that will. Then it can be challenged, or might be possible that will can be considered as the invalid. But if it is the valid will, like every paper is signed by the जो बिल लिखने वाला है and witness, and it is the fulfill all contract term and condition, then nobody can challenge will. Okay, first of all, when you have to write will or you are thinking for the succession planning, you have to do your list of asset that we have the discuss in the various presentation, and where we have discussed about the financial security or portfolio audit. So always I have told you, whatever you have asset, whatever you have wealth, whether it can be immovable, movable property, financial property, IP, or any business, you must have the document like how many land you have, how many house, koti, flat you have. In case of the movable property, where you have the gold, where you have the jewelry, whether you have the costly painting, how many you have car, bike, etc. In case of the financial asset, it is the bank account, it can be saving account, it can be current account, FD, mutual fund, share, insurance. You have investment in some startup company, or your friend has started one particular company where you have invested like 5 lakh rupees, 10 lakh rupees at any amount. Then it is the investment. So how much you have the asset, you must have the listing. I have asset, suppose that I have two flat, one flat in Noida, another flat in Mumbai. Noida flat cost is the 40 lakh rupees, Mumbai flat cost is the 60 lakh rupees. Noida flat I have purchased in 2015 and Bombay flat I have purchased in 2002. Current value is the 1 CR, 2 CR, or I am not acceptable the current value. Yes, I have the legal document. मतलब कि this property is in my name. Sometime what happened कि I have purchased this property in name of my mother. तो वो उसका legal title किसके पास है and who is holding legal paper. Suppose that I have purchased Bombay property in name of my mother, but I am holding legal paper. Okay, तो ये सब चीज आपके पास होना चाहिए. Now, so my question to you: do you have list all wealth, whatever you have the wealth or asset? So do you have the list? Do you have the legal title of asset? Sometimes what happened, I have won a land in Noida, but when I have seen the legal title, तो पता चला कि पिताजी ने दादाजी के नाम पर परचेज किया हुआ, या my father has purchased in name of his elder brother. तो ये एक प्रॉब्लम आता कि whatever you have asset,
कहने को होता है दिस इज योर असेट, बट इन रियलिटी लीगल टाइटल आपके पास नहीं होता, इट इज द समवन एल्स, वेदर इट कैन बी दादा दादी, वेदर इट कैन बी इन नेम ऑफ मदर, वेदर इट कैन बी नेम ऑफ द ताऊ, मौसा जी, मामा जी और समवन एल्स, बट रियलिटी यू आर द ऑनर ऑफ दैट असेट। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि हु इज होल्डिंग लीगल टाइटल, देन do have the control over all asset. Suppose that I have land in Noida and someone else has taken the kabja, but I am not able to take the free that land from that particular banda, person, guys, anyone. I have taken legal action, I have taken help of police, everything I have taken, I have given the legal notice, but he is not vacate that land. It means that asset is not in my control. So why I am thinking this is my asset? So ये सारा चीज you must have know. Do you know the current value of your asset or wealth? जो आपके पास whatever you have asset, whatever you have the wealth, whether it is the mutual fund, whether it is the share, whether it is the land, whether it is the flat. So do you know what is the current value? What I want to say, in 5 years back you have purchased or your father has purchased the share in A Limited, but now cost of the A Limited 5 years back it is was the 100 rupees. Now it is the cost of the fair market value of that share is the 800 rupees. So you have to understand what is the current value. And last one, you have the storage of all legal document with you. As you are saying ki this property with me, you are residing in that property. One thing, it means ki it is the control in your, but do you have the legal document with you? Pata chala legal document is holding by your tau ji, by your mama ji, by your fufa ji, by your mausa ji, and he is trying to misuse that document. वो अपने बेटे के नाम पर या किसी और के नाम पर करना चाहते हैं. तो holding asset is the different thing and holding legal document in your name is the different thing. तो ये सारे चीज आपको समझना चाहिए. If you have given the 100% marks in all question, then you are the absolute honor. If you have something doubt, like sir I am holding asset but legal title किसी और के पास है, legal title in my name but this paper is holding by someone else, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और this problem will create after some time, might be possible after 1 year 2 year, ये may be आज प्रॉब्लम नहीं है बट आफ्टर यू आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. जस्ट आई एम गिविंग द one small example in a short time कि जो मिडिल में बैठे हुए हैं, he is the Mr. X, you can say अंकल जी, and he has started one business in Delhi और उनका बिजनेस ग्रो कर गया. देन ही स्टार्टेड अनदर शॉप इन दिल्ली, वो भी काफी पैसा कमाया. एंड आफ्टर दैट ही हैज स्टार्टेड 2 शॉप इन नोएडा एंड 2 शॉप इन दिल्ली. ही हैज 2 सन, एक जो लेफ्ट में है एक राइट में है, एंड ही हैज 1 डॉटर जिसका उन्होंने शादी कर दिया. एंड ड्यूरिंग द टाइम ही हैज टेकन डिसीजन कि नोएडा में आई हैव 1 कोठी एंड दिल्ली आई हैव 1 कोठी. तो 1 कोठी विल बी गिवन टू द नोएडा वाला को, बड़े वाले को दूंगा, और दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है दैट विल बी गिवन टू द यंगर चाइल्ड. एंड जो दिल्ली की जो शॉप है वो भी यंगर वाले को दूंगा और जो नोएडा का शॉप है वो मैं एल्डर वाले को दूंगा. ये भरवली ही हैज टेकन डिसीजन. और कुछ दिनों के बाद इनका देहांत हो जाता है. वो सन हैज टेक रिस्पेक्ट टू फादर और उसी के अनुसार काम करने लगे. लेकिन दुनिया है, वो जो नोएडा में बैठा था उसको समझाने लगे कि why you are stucking in the Noida, Delhi is the mature market, Delhi has the more opportunity, why not you have to ask the property in Delhi. दिल्ली वाले को समझाया गया कि नोएडा is going to up growing market, why you are holding all asset in Delhi, अब नोएडा में भी प्रॉपर्टी मांगो. फिर दोनों भाई में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ. मदर ने और फैमिली वाले ने मिलकर सेटलमेंट किया कि ठीक है, बोथ विल हैव 1 शॉप इन दिल्ली एज वेल एज नोएडा. वो काम चलने लगा. इसी बीच में उनकी बेटी भी आ गई, बोली कि चलो भाई दोनों भाई लड़ रहे हो, गिव मी माय प्रॉपर्टी. दोनों भाई ने बोला हाउ वी कैन पे योर, हाउ वी कैन गिव योर प्रॉपर्टी, देयर इज नो शेयर इन फादर प्रॉपर्टी. उन्होंने केस कर दिया.
4-5 साल लीगल हरासमेंट चला, पैसे खर्च हुए, टाइम बर्बाद हुआ, एंड आफ्टर दैट कोर्ट हैज गिवन डिसीजन एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट, सन एंड डॉटर हैज द इक्वल राइट. सो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सन और डॉटर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी. व्हाट हैपेंड विद इन द 4 ईयर ऑफ टाइम, बिजनेस भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ क्योंकि आप कोर्ट कचहरी में टाइम लगाते हो, सोसाइटी में रेपुटेशन खराब हुआ, अगेन पैसे लॉस्ट हुए, और सबने गाली दिया इस मिस्टर एक्स को. रीजन, बेटी ने बोला कि जब मुझे ये प्रॉपर्टी मिलना था तब भी मेरे को 4 साल लगा दिया. दोनों बेटे ने ऐसे गाली दिया कि बुड्ढे ने ढंग से काम करके नहीं किया, हमें जो 50-50 मिलना चाहिए था 1/3 मिला. तो ओनली ड्यू टू द सक्सेशन प्लानिंग, वो जो बहुत अच्छा करके गए, बिजनेस इतना अच्छा स्टेब्लिश करके गए, फिर भी वो गाली सुनने जाने के बाद. सो इट इज द आवर ड्यूटी कि हम जीते जी जितना रिस्पेक्ट पाते हैं, जाने के बाद भी अगर हम उतना रिस्पेक्ट पाए तो देन इट इज अ वेरी गुड. सो वी हैव टू थिंक अबाउट द सक्सेशन प्लानिंग. दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ salary class. As you know ki 70 to 80% of all over world is the salary class person, where there is a one earning person and he has the one generation parent and another generation kids. अगर ये खुदा ना खास्ता ये जो अर्निंग बंदा है, he got some problem, then what will happen with his family? बच्चे को कौन देखेगा, उसके पेरेंट को कौन देखेगा? सपोज दैट हिज वाइफ इज गॉट मैरिज टू अदर, तो उसके पेरेंट का क्या होगा, इसके बच्चे का क्या होगा? मतलब देयर आर द लॉट ऑफ द सिचुएशन. देन ही आल्सो हैज टू थिंक द सक्सेशन प्लानिंग. व्हाट हैपेंड, वी हैव जनरली वन पर्टिकुलर myth कि सक्सेशन प्लानिंग will is made for only rich, super rich person, like who has the business, who has the income of 5 CR, 10 CR, wealth of the 50 CR, 200 CR, 500 CR. No, it is for everyone, whether you are earning 20,000 rupees, whether you are earning 1 lakh rupees, whether you are earning 100 CR, because nobody know problem कब आने वाली है, ये कोई नहीं जानता. And just I give the one particular example. We have seen lots of things. Just once again, in Corona, it is the uncertain, anything can be happen with anyone at any time. तो why not we prepared right now? क्योंकि ये अगर हमारे साथ कुछ हो गया, then it will create a challenge for protection of my wealth as well as my family. So why not I start solution right now? Okay. Now you will say, Manish, आपने सब चीज बता दिया, मतलब what is the need, why I will do the planning? Then reason is that suppose that your kids want to settle abroad. वो पढ़ाई करने के लिए यूएसए गया and he like USA and he want to settle there, and you have the 4 property in India. You have 2 kids, one in the USA and another kids in India. If you given the 50% property to the guys who settle outside India and the guy in India, then it will create the problem for who has to settle abroad. Reason, जब वो property बेचने जाएगा, he has to come India and he has to wait 1 month, 2 months, 3 months. Okay, if you have made the some such as the plan कि इंडिया का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है will be settled with my younger son who is in India, or whatever I have the liquid money, वो मैं elder son को दे दूंगा, और the son who has the settle abroad, so उसको आने जाने का भी टेंशन खत्म हो गया. So it is the planning, it is the reason. I have told you कि as per Hindu Succession Act equitable right है. Now after 2006 son and daughter have the equal right. If you want to give less or more right to your daughter, then you have to go for the succession planning. Otherwise, after you, your daughter will ask, may ask, may not ask. That will depend on the daughter. But if she has asked, she has gone court, then it will be the distributed with your daughter and son as the equal proportionate. Then if you want to donate to any trust, any temple, any hospital, or anywhere, it is not possible. Suppose that I have 1 CR in the liquid money, whether in bank account, whether in FD account, or in share, और मैं चला गया और मैंने सिर्फ ये बोला था कि in that money give 10 lakh rupees to my driver because he has given the
15 ईयर या 20 ईयर विथ मी, और अब तुम लोग इसको नौकरी पर नहीं रखोगे तो मेरे ड्राइवर को दे देना, सो ही कैन परचेज वन कार एंड ही कैन रन एन ए टैक्सी, सो आपका उसका लाइफ चले। आई एम वेरी मच श्योर, इवन मैं उस सिनेरियो पर हूँ, मेरे पिताजी 1 करोड़ दे के जाए और बोले कि ड्राइवर को 10 लाख रुपया दे दो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव, आई एम द सेल्फिश। माइट बी पॉसिबल यू आर नॉट, यू कैन गिव, यू कैन डोनेट एज पर योर फादर विश, बट 70, 80, 90% केस में नहीं होता है। तो इफ यू वांट टू डू कि मेरा जो विश है वो सक्सेस हो जाए, वो मतलब कि वो जो मैंने सोचा है वो सफल हो, then it is the necessity to draft your will, or as well as you have to make the succession planning. Again, when you have the money in bank, you have the FD, you have the share, so for all transfer you need legal heir certificate. Again, for legal heir certificate, court asks for your will, कि where is the will, who is the legal successor. तो ये सब issues आता है. Sometime my father has given the some family loan, friends loan, जो हमें जनरली बताते नहीं है, तो जिस काइंड ऑफ द फैमिली सक्सेशन प्लानिंग में वो सारी चीजें आ जाती है। एंड आज के डेट पर डिवोर्स इज अ वेरी कॉमन थिंग, वेयर इट वाज द 10 to 20 years back, it was the only in the high class family, or in the middle class family, the very less, but now it is the very going to the, you can say the popular or very common कि divorce is going. Suppose that I have the some fear कि मेरे बच्चे का शादी किया 2 साल के अंदर डिवोर्स हो गया, तो आफ्टर डिवोर्स उस मेरे बेटे की जो वाइफ है वो हाफ प्रॉपर्टी लेके जाएगी, तो व्हाई नॉट आई क्रिएट द सच काइंड ऑफ द प्लानिंग कि उस प्रॉपर्टी पर किसी का राइट ही नहीं हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जहां पर वी नीड सक्सेशन प्लानिंग। एज आई टोल्ड, लास्ट वन थिंग आई वांट टू से यू कि इफ यू आर द फीमेल वर्किंग and you have the asset of the 1 CR, asset you have the 1 CR and you want to help your father कि I am the working female and my father is the retired and he has no source of income. I am thinking कि चलो within the 10 days I will park 20 lakh rupees with my father so he can deposit in bank, और FD से जो भी इंटरेस्ट आए उससे वो अर्न कर सकते हैं, और he can start any business with the 10 lakh rupees, 20 lakh rupees, so वो अपने लाइफ चला सकते हैं। What happened? I have taken decision, next day मैं नहीं रही। What will happen as per Hindu Succession Act is saying कि if you are the female and you have no will, you have no succession planning, then all money whatever you have earned will go to with your children or husband. तो मेरे जो भी चिल्ड्रेन और हस्बैंड होंगे वहां जाएगा। सपोज दैट आई डोंट हैव चिल्ड्रेन एंड हस्बैंड, देन इट विल गो इन माय हस्बैंड फैमिली, मतलब कि हस्बैंड के पेरेंट के पास जाएगा, हस्बैंड के सिबलिंग के पास जाएगा, और कहीं ना कहीं हस्बैंड का कोई ना कोई जरूर होगा। ठीक, अगर पूरे हस्बैंड के फैमिली में कोई नहीं रहेगा, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, मौसा मौसी, कोई नहीं रहेगा, देन इट इज द राइट टू गो टू माई मायका, तब फिर मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन के पास जाएगा। सो इट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। Again, if you are the male, then first right is the mother, your wife and children. लेकिन if you want to give the someone, your sibling को देना कुछ चाहते हो या father को देना चाहते हो, then again you have to make your succession planning. That we have discussed already. As now you got the what is the need of the importance of will and why it is the succession planning needed. One more thing you have to understand, if you got something in will, if you got something in the succession planning through anyone, then suppose that I got the 100 CR from my mama ji, उन्होंने शादी नहीं किया था and हमारी फैमिली ने ही पूरा ध्यान रखा, तो he has given the 50 CR to me and 50 CR to my brother. तो how much will be taxation, whether it is the 30%, 40%, 10%, और there is no taxation. तो ये सारा चीज हम आपको बताते हैं. Then now you will say, Manish, you have given the situation, you have given the lots of the problem. Yes, it's happening, it's exist in world. Then what is the solution? Then solution, we have the solution like we can provide the will, we can suggest you private trust, we can provide the family settlement, or if your family is not going to understand with you, आपके बात से family agree नहीं करने के लिए तैयार है, then we will provide the mediation and arbitration for your family members. So
फैमिली के बीच में देयर इज नो सच काइंड ऑफ द डिस्प्यूट और यू कैन एंजॉय योर हैप्पी फैमिली। देन व्हाट इज द प्रोसेस इज दैट सबसे पहले जो हमने बात किया था असेट लिस्टिंग। वट एवर यू हैव असेट, वेदर इट इज द फाइनेंशियल असेट, वेदर इट इज द IP, whether you have the trademark, whether you have the design, whether you have the immovable property, or whether you have the whether you have business. So whatever the process, you have to list asset listing. Then we will go for the portfolio audit कि उसका control आपके पास है कि नहीं. If it is the control, then what is the current value? If it is the current value 1 CR, 5 CR, 10 CR, then it is the sellable or not. Suppose that मैंने एक लैंड तो परचेज कर लिया, now it is the cost of the 5 CR, लेकिन वहां पर एक गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि it is going to the construction in that area, nobody can sold out, then it means आपके हाथ में कुछ नहीं आना है. तो there are lots of those situation. Then फैमिली मेंबर स्टेटस. फैमिली मेंबर स्टेटस मीन्स कि वो बंदा कहाँ सेटल्ड है, इंडिया में है, इंडिया के बाहर है. सपोज दैट I have 2 sons and one want to stay in Delhi and another is interested to stay in Bangalore region. Bangalore का weather अच्छा है, he has the lots of opportunity in Bangalore. He is saying I don't want to come Delhi. तो उसका status क्या है? What is his desire? He is saying कि पापा दिल्ली के जो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करो, I want to purchase in Bangalore. तो वो desire भी पता हो तभी we can do. Then family mentorship, as there is a dispute and you are not able to solve your dispute, then definitely we will provide the arbitration, we will provide the mediation for your family mentorship. And again, in last, as per your situation, as per your FDW, matlab family desire and will, we will provide the solution to you, whether it can be the will, whether it can be trust, or else anywhere. Now you will say, Manish, why I will go with you? Because by qualification, I am chartered accountant and I am the speaker, and various stages I have given the speak, and I am the expert in the succession planning because I did the lots of the succession planning in the last 3 to 4 years, and I have given the consultancy for the tax as well as the business growth. I am the active in the social media where I am the involved with the Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., where I am providing lots of the awareness, as well as I have YouTube channel where I am providing the awareness about the business, awareness about the succession planning, so etc., all those things. Again, I have the some award where in the taxation and the succession planning, and I have given the lots of the speech in the various platform where you can understand my ability, my expertness. So this is the for with me, and you have to make the asset listing like कि हाउस कहाँ पर है, व्हाट इज द नेचर, क्या कॉस्ट है, व्हाट यू हैव द परचेज, FMV और लीगल टाइटल किसके नाम पर है, व्हाट इज द सिचुएशन, बैंक लॉकर में है या नहीं. जस्ट आई टेक द वन एग्जांपल. हाउस नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आई हैव परचेज इन द 40 लाख रुपीस इन ईयर 2002. नाउ फेयर वैल्यू इज द 80 लाख रुपीस, बट लीगल टाइटल इन नेम ऑफ द मदर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन द बैंक लॉकर. ओके, तो ये फॉर्मेट में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा आज, बिकॉज मैंने लास्ट 3 days बैक भी बोला था एसेट लिस्टिंग का मैं फॉर्मेट शेयर करूंगा. एट दैट टाइम आई हैव नॉट शेयर. टुडे आई विल शेयर इन द ग्रुप, और आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपने अपने में लिस्ट डाउन कर ले, और देन यू विल गेट अंडरस्टैंड. और इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ द 1 day, एटलीस्ट यू विल टेक 5 to 10 days, क्योंकि छोटे आई वांट टू लिस्ट योर ऑल असेट, whether it is the small or whether it is the high value transaction, anything. तो वो आपको टाइम लगेगा, आप इस चीज को करें. नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन आंसर, यू कैन आस्क टू मी. एंड समाना जी, इट इज द रिक्वेस्ट टू यू कि यू कैन स्टॉप यूट्यूब लाइव, सो एनीवन कैन आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन. थैंक यू. And all participants are free to ask any question, whether it is related to this topic or related to you and related to anyone you have faced or you have seen any scenario, any circumstances in your life. मनीष सर, आपका बहुत अच्छा था ये टॉक, बहुत अच्छा लगा. एक बात बताएं, इस विल में एक्सिक्यूटर का आपने कहीं कुछ ने मेंशन किया कि विल का एक्सिक्यूटर भी होता है, और हमें उसमें अगर कोई एक्सिक्यूटर बनाते हैं उसके भी एक्सपेंसेस को भी अकाउंटेंट करना चाहिए, क्योंकि कोई वो अपना टाइम एनर्जी और इतना कुछ देगा तो उसके लिए भी सेट असाइड फंड्स होने चाहिए.
Yeah, ma'am. Just और I have written कि we can go for the will, or we can go for the private trust, or we can go for the family settlement. But we have not gone for the lengthy process of the कि how you have to draft will and what is the necessity of the will. Just I give the one example कि आपको विल में एक विटनेस का सिनेरियो होता है। पता चला कि मैं आई एम एट द एज ऑफ द 60 और मैंने विटनेस किसको बनाया 70 साल के अपने बड़े चाचा को। क्यों? क्योंकि मैं बड़े ताऊ जी को बहुत आदर करता हूँ। पता चला मेरे से पहले ताऊ जी चले। ओके, देन वो विटनेस सही नहीं होता है। ओके, देन व्हाट वी हैव टू थिंक कि विटनेस एज में कम हो और वो एक प्रोमिनेंट बंदा हो। ऐसा नहीं कि ड्राइवर को मैंने बना दिया तो ड्राइवर को बना दिया, तो इस सिनेरियो में कल को अगर विल चैलेंज होता है तो एनीवन कैन से कि ड्राइवर या नौकर को वी कैन डू द अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैं अभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में विल या प्राइवेट ट्रस्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं गया। जस्ट आई हैव गिवन द वन सॉल्यूशन वेदर वी कैन गो फॉर विल, वेदर वी कैन गो फॉर द प्राइवेट ट्रस्ट, वेदर वी कैन गो फॉर द फैमिली सेटलमेंट। लेकिन मैं अभी उसके इन में नहीं गया। ठीक है मैम। एक आपने ये भी सजेस्ट किया था मनीष सर कि जैसे किसी का एक बच्चा बाहर है और एक बच्चा वहां रहता है, तो विल में ऐसा होना चाहिए कि ये वाला जो दूसरा वाला बच्चा नहीं आ सकता, 2-3 महीने रह नहीं सकता जॉब छोड़ के या बिजनेस छोड़ के या या अपनी फैमिली छोड़ के। तो आपने कहा कि उसके लिए तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज होएगा कि ऐसे में कि वो मैम बच्चा पावर जो ऑफ अटॉर्नी यू कैन यूज, पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी यूज, लेकिन सम टाइम व्हाट हैपन कि सपोज दैट आपका ही एक बच्चा कनाडा में है और आई वांट टू परचेज योर प्रॉपर्टी और आप कहते हैं मेरा बच्चा वहां से आ नहीं सकता, आई एम सेंडिंग द पावर ऑफ अटॉर्नी। माइट बी पॉसिबल आपका जो परचेजर है ही इज नॉट सेटिस्फाई, रीजन पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी मेड इन द अनदर सिनेरियो। आज मैंने परचेज कर लिया आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स 5 ईयर, वही बंदा आके बोले कि नहीं पावर ऑफ अटॉर्नी तो गलत बन गया था जी, या आई वाज नॉट अवेयर, किसी और ने फ्रॉड कर लिया, तो ये मैं सेल नहीं मानता हूँ। ओके, तो सम टाइम परचेजर ही एग्री नहीं, सम टाइम ये परचेजर ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं एग्री करते हैं। अगर योर परचेजर इज एग्री देन देयर इज नो इशू। और आपने एसेट्स भी बोले, तो एसेट्स में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, मूवेबल इमूवेबल। आई या मीन मैम, मेनली ज्वेलरी वगैरह आ गई, पर और भी घरों में इतनी चीजें होती हैं जिनकी कई लाखों में करोड़ों में, दैट इंक्लूड्स वॉल आर्ट जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, या मतलब चीजें भी हैं, चाहे घर के या फर्नीचर क्रॉकरी भी है, एक्सपेंसिव वाली भी होती है, तो वो सब भी लिस्ट डाउन करें और वो भी सारे चीज डिवीजन। मैम। सपोज दैट कि आपको शादी में यू गॉट द सिल्वर का प्लेट मिला हो, यू गॉट द सिल्वर आर्टिकल्स मिला हो, ओके, या एनीथिंग लाइक ज्वेलरी का हो, सिल्वर का हो, डायमंड का हो, या फिर सम टाइम व्हाट हैपेंड कि जो सोफा है वो काफी एंशिएंट है, काफी महंगा, मान लें 5 लाख का आपने सोफा ही परचेज किया। ओके, यू हैव द ब्रांड न्यू लैपटॉप, 2 लाख का आपने लैपटॉप ही परचेज किया, 2 लाख का आप आईफोन, 1 लाख का आप आईफोन लेके चल रहे, तो एवरीथिंग इज द असेट, whether it is the you can receive after selling it, okay, then it is the asset। हाँ, अब फोन को आप इसलिए नहीं कर सकते हो कि आज आपने फोन किया आफ्टर 3 and 4 ईयर इसका कोई लाइफ नहीं होता, बट इन केस ऑफ द लैपटॉप उसका लाइफ होता है। टेलीविजन आपने 5 लाख का टेलीविजन खरीदा, या होम थिएटर, कभी कभी यू हैव सीन इन सम हाउस या इन सम बिग फैमिली कि उन्होंने होम थिएटर बनाया हुआ 25 लाख का, 50 लाख का। अब ये मैं किसको दूंगा? एक बेटे को दूंगा, दोनों बेटे को दूंगा, या होम थिएटर 20 से तोड़ दो, पता चला दोनों में से कुछ नहीं मिला। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हैं। सम टाइम यू हैव सीन कि घर में झूमर होता है 2-2 लाख का, 5-5 लाख का, तो ये मैं किसको दूंगा? सपोज दैट आई हैव 2 फ्लोर, फ्लोर 1 फ्लोर 2, एंड झूमर 5 लाख का मैंने सिर्फ एक फ्लोर पर लगाया हुआ है। अब तो दूसरा बेटा बोलेगा पापा जी आपने तो झूमर लगा दिया एक भाई को, मेरे को तो कुछ नहीं दिया। तो एवरीथिंग यू हैव टू लिस्ट डाउन। सो आपके जाने के बाद आप उनको जितना मतलब जब तक वो जीवित थे जितना इज्जत देते हो, जाने के बाद भी उतना ही इज्जत दो। तो दैट इज द यू हैव टू लिस्ट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। मनीष जी, या अगर सिंगल चाइल्ड हो तो फिर उसमें तो क्या करना चाहिए? मैम, सिंगल चाइल्ड में सच इज देयर इज नो प्रॉब्लम। सपोज दैट यू हैव वन सन, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आफ्टर यू ऑल असेट एंड लायबिलिटी विल गो टू हिम और हर। लेकिन अगर वो आपका बेटा है और शादी हुआ और पता चला 2 साल 3 साल 5 साल के बाद अगर डिवोर्स हुआ, तो पता चला यू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द 10 ईयर, वो सारा चला गया बेटे के पास, और उसके बाद फिर क्या होता है
कि डिवोर्स हुआ तो 5 CR आपकी जो बहू थी, जो किसी और के साथ जाना है या सिंगल ही रहना है, तो वो लेके चले गए। देन इट इज द नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ कि वो प्रॉपर्टी जो आपने अर्न किया या आपके फैमिली से खानदानी चला आ रहा है, वो आपके बच्चे या उसके बच्चे के पास ही रहे, किसी और के घर में ना जाए। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है मैम। You mean to say you have to mention that? डेफिनेटली। But otherwise, क्या लिखना होता पेपर पे? You don't have to notarize it. Do you have to notarize or just No. plain paper पे लिख लेना है? मैम Sign करके। आप विल को सिंपल पेपर पर, प्लेन पेपर पर बना के रख लो। नोटराइज योर चॉइस, रजिस्ट्रेशन योर चॉइस। वो क्या होता है, नोटराइज और रजिस्ट्रेशन कराने से क्या होता है, इट्स गिव द मोर ऑथेंटिसिटी। बट एक प्लेन पेपर पर भी लिखा हुआ, इवन यू हैव द वर्बली, या आपने वीडियो पर रिकॉर्ड कर दिया कि मेरा ये एसेट इसको जाएगा, ये एसेट इसको जाएगा, ये चीज इसको जाएगा, और इट इज द कंफर्म एंड द वैलिड, या आपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में बताया। सपोज दैट आपका एक्सीडेंट हो गया और उस टाइम आप विल ड्राफ्ट कर रहे हो, तो वो हो जाता है कि नहीं, आपका माइंड ही राइट नहीं था। ओके, लेकिन अगर राइट नाउ अभी आप मेरे से डिस्कशन किया और आपका सारा मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल सही है, फिर आप कुछ भी रिकॉर्ड करते हो, प्लेन पेपर पर लिखते हो, दैट इज द वैलिड। तो ये टाइम टू टाइम, सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है कि उस विल का या जो आप डॉक्यूमेंट टेस्टामेंट बना रहे हो उसकी वैलिडिटी क्या है। जी, तो मतलब one has to mention that I'm in my proper state of mind, and I'm writing this in my proper state of mind. तो मैम यू वांट टू से कि फिर से एक बार सवाल पूछना मैम, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर गया। One has to write just in simple words all the assets. It could be the Yeah, locker, there is it can be a property. No, And yeah. I'm writing it in the proper state of mind, and the count numbers, everything. Yeah, there is no specific language. आप सिंपल लैंग्वेज में जो आपको इंग्लिश समझ में आती है, ऐसा नहीं है कि एज पर सेक्शन में आपको ऐसे लिखा हुआ आपको यही चीज लिखना। जैसे कि इन विल के डिफिनेशन में मैंने बोला कि दैट इज द लीगल डिफिनेशन, कि आप उसको एक वर्ड भी नहीं हिला सकते हो। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर विल, देन यू कैन राइट एनीथिंग इन एनी मैनर, जो आपको इच्छा करता हो, हिंदी, इंग्लिश, वर्बल, ओरल या नॉर्मल, उसमें थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली भी आगे पीछे हो जाए, ऐसा कोई मायने नहीं रखता। कि सपोज दैट यू हैव रिटन माय बोथ हाउसेस इज गिवन टू माय एल्डर सन, तो ये नहीं होगा कि ईच के आर के जगह पर आपने ईच लगा दिया तो ये गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ओवरऑल मीनिंग सही होनी चाहिए और जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। I have any Manish sir? questions, I'll call Yeah. you or find out. Okay, thank Yes, you. sure ma'am, sure. हाँ जी, मनीष सर, Yeah. ये जो जैसे आपने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, तो इज इट अ गुड आइडिया कि कई सोर्सेस को ये रिकॉर्डिंग भेज दी जाए जिसको ट्रस्ट करते हैं, ताकि कोई भी मतलब सभी कह सकते हैं सबके पास सेम रिकॉर्डिंग है? Yeah, this is the best thing for the planning. Suppose that just I'm giving the one thing कि मेरा एक बेटा कनाडा में बैठा हुआ और एक बेटा इंडिया में है, ठीक है, और आज मेरा तबीयत खराब हो गया और आई एम प्लानिंग, मतलब मुझे लग रहा है मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं। मैंने एक विल बनाया छोटे बेटे के सामने, तो बड़े को प्रॉब्लम ना हो तो वेदर आई कैन डू विद द जूम कॉल, कि जब मैं बिल बना रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो जूम कॉल ले लूं, सो दैट कि मेरे पास एक एविडेंस हो कि बेटा मैं तो तेरे को बता के कर रहा था, कि कल को दोनों भाई में कंफ्लिक्ट ना हो। तो यही ये सब जो प्लानिंग है, यू हैव टू थिंक, और यू वांट टू टेक मतलब कि यू वांट टू टेक माय एक्सपर्टनेस, तो वो चीज धीरे धीरे सब चीज निकल के आता है। तो डेफिनेटली यू कैन डू द वीडियो रिकॉर्डिंग। आपने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया और सारे फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कि कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो दूसरे भी लोग आके मैनेज कर सकते हैं कि नहीं भाई ये तो तूने ये बोला था या पिताजी ये बोला था उस टाइम तूने क्यों नहीं काउंटर किया। तो ये सब प्लान आप कर सकते हो। हाँ जी, पर इसको अगर रिवाइज करना हो, क्योंकि ये एक मतलब यू कैन एनी टाइम रिवाइज करके, तो उसमें बोल सकते हैं कि रिवाइज्ड वन है, वो डेट को मतलब इग्नोर किया जाए, वो वाला रिकॉर्डिंग एंड या रिटन मैसेज टेस्टिमोनियल मेंशन कि आपने पिछला कब बनाया था, उसको आप पहले क्या था और अब आप रिवाइज क्या कर रहे हैं, तो वो एक वैलिडिटी के साथ आपको करना पड़ेगा। पर जीते जी तो सबको, बच्चों को सारी चीज डिस्क्लोज करना अच्छा आइडिया नहीं है ना, सबकी फैमिली के लिए कह रही हूँ मैं, अपने लिए नहीं कह रही हूँ, और लोगों के लिए, क्योंकि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है कि मतलब when your old age is approaching, then you say, or when you feel health reason or something is coming up. It is my suggestion to you or anyone, even to me, कि if I'm going to write a will,
तो जिसको जिसको मैं देने वाला हूँ सबको बता के रखूं। जनरली कहते हैं कि तो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ वही सबसे बड़ा लड़ाई का जड़ है। सपोज दैट मेरे 3 बच्चे हैं और मैं 2 को देना चाहता हूँ, 1 को नहीं देना चाहता, मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, तो जिसको नहीं मिला कल को वो मेरे विल की वैलिडिटी पर सवाल क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर मैं सही हूँ और मैंने तीनों को बताया कि बेटा 1 को मैं 80 दे रहा हूँ, सॉरी 1 को मैं 40 दे रहा हूँ, दूसरे को 50 दे रहा हूँ और तीसरे को 10% दे रहा हूँ, अगर कोई डिस्प्यूट करेगा तो आज के आज करेगा, ओके। लेकिन अगर मैंने 3 बेटे को मैंने किया, 1 को 40, 1 को 50 और 1 को 10, और मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने विल रख दिया, मेरे जाने के बाद बच्चे ने खोला तो तीसरा तो लड़ लेगा और वो कोर्ट में जाएगा। यही तो प्रॉब्लम होता है, जो दैट वी आर थिंकिंग कि विल इज द बचा के रखना चाहिए, बहुत ही गलत चीज है। वो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए कि जो लड़ाई हो ना आपके सामने लड़ लेना, आप क्यों जाने के बाद लड़वाने पर तुले हुए हो किसी को। Sir, I've got 2 questions. या सर, या आनंद जी। Ji, namaste. So number one is that, see, I have a single child, a son, and my wife passed away 9 years ago. So there are many investments where my son is nominee. Yeah. So somewhere I read that nominee doesn't have legal validity. Is something like that? Yeah, 100% you are right. Yeah, but since he's the only child, automatically actually, as per law, nominee is the legal holder, but it is not a legal title. Like आपके जाने के बाद even you can make nominee to me कि I can take the money from bank, but I am the not legal holder of that, कि मैं वो रख के मैं अपने पास नहीं रख सकता हूँ, just I am the legal custodian कि whatever you have the money. So what my son needs to do, since he's the only heir, sort of, so there's there no is will. no problem. There is no problem in that scenario, because suppose that you have the share, mutual fund, bank account, and after you in all account he has given the nominee, okay, yes, sir, then yes, definitely that amount will be given to him because he can produce कि he is my father. So there is a no such as the conflict, like आपकी कोई बेटी नहीं है या आपका कोई नहीं है, who can conflict कि भाई इनकी प्रॉपर्टी में मेरा हक है, then there is no such as the problem. In a spite of that, I will give the one suggestion to you कि आप इसमें एक इवन वन चाइल्ड का है फिर भी गो फॉर द सिंपल विल, क्योंकि आपका बेटा एक ही है, आपको ज्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं है, एक विल कर दे, सो कल को वो लीगल हियर सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने जाए तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। So what should the will say? विल में कि I am the Mr. Anand and I have this and I have the list of the property, this, and after me all property will go to him, and there is no other holder, legal holder of this property. इस तरीके से you can make anything. Thank you. And one more last question. Yes, so sir. We have a flat in Pune. Okay, so that flat was in the joint name of my late wife and me. तो सबसे पहले तो सर अगर मैडम है नहीं तो सबसे पहले तो आप अपने नाम पर या बेटा के नाम पर कराओ। रीजन कि आज मैडम नहीं है, मतलब कि आपकी वाइफ नहीं है, कल को आप नहीं रहते तो इट विल क्रिएट द बिग प्रॉब्लम। रीजन नाउ यू विल राइट योर विल। आप जिंदा हो सर, आप अपना प्रॉपर्टी तो लिख सकते हो, जो नहीं है उनका प्रॉपर्टी आप कैसे लिख दोगे किसी और के नाम पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज माय पर्सनल सजेशन टू यू कि उनके नाम का प्रॉपर्टी पहले आप म्यूटेशन करवाओ बेटे के नाम पर या अपने नाम पर, देन यू कैन ट्रांसफर टू योर सन। अच्छा, तो he automatically if I don't do anything it will not go to him? No. ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा सर? वो फिर क्वेश्चन ये उठेगा नहीं होता है, because I had the same problem. I first transferred it in my name and my daughter's name, both. सर आप ये बताओ ना सर, There's nobody beyond my son. No, there is only me and my son. नहीं सर, मैं एक चीज आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आज मैं पुणे आ जाऊँ और बोलूं कि सर मैं आपकी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूँ, जस्ट टेक द वन सिनेरियो, आपको तो मनीष जी परचेज कर लो। मैं देखता हूँ कि एक होल्डर आप हो और एक होल्डर आपकी वाइफ है, मैं बोलूंगा अदर बंदा को लेके आओ, तो आप बोलोगे कि नाउ शी इज नो मोर, देन आई नीड योर डेथ सर्टिफिकेट कंफर्मेशन। डेथ सर्टिफिकेट तो आप प्रोवाइड कर दोगे, कंफर्मेशन कहाँ से आएगा? देन इट माइट बी क्रिएट द सम प्रॉब्लम। लेकिन जिस दिन ये डेथ की थी उसी दिन आप म्यूटेशन अपने नाम पर करवा लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरीके से तो इट इज माय सजेशन टू यू कि जो गलती हो गई, लेकिन अभी आप उस चीज को कोर्ट में या वहां का जो लोकल एडवोकेट है उससे आप प्रॉपर्टी अपने नाम पर या अपने सीधे जो आपकी वाइफ का राइट है 50% का, वो अपने बेटे के नाम पर डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो। आपका राइट आपके बाद चले जाए बेटे का, नो प्रॉब्लम। लेकिन
आपकी मैडम का जो हाफ पोर्शन है उसका राइट तो अपने बेटे के No, नाम पर या उसके नाम wife पर? has actually willed that 50% of her right would be with me and 50% with son. So technical situation is 75 is with me and 25 is with him. Okay, so she has written the will. She has written a will which was never executed. Okay, ठीक है, तो you can discuss with me the Anand sir. You can have the my number, so we can have the. I can give the some more suggestion to you what you have to do. Yeah. Ji. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Any other question? Achha, now things like electricity bill and this simple things like the conveniences like gas and also electricity bill has been in my dad's name. He passed away about say almost 9 months ago, and it continues in his name, but the phone number was always in my name because I always paid it. So the mobile number was. So is that okay, or does one need to change that? Just यहाँ पर एक दो businessmen भी होंगे. Just I give the one example. If you want to take the GST registration, if you want to GST registration, so in GST registration or company registration, the government ask utility bill. आप utility bill में अपने father का नाम दोगे. Then they ask the NOC from your father. Now you will say now he is no more involved. Then it will create the problem. जब आपको एक रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ सकता है तो सोच लो कि आप किस प्रॉब्लम में हो सर. अच्छा अच्छा, ओके, तो मतलब वो करना जरूरी है. जी जी, थैंक यू सर. Anandji, you can call me up. I can discuss it with you also because I've been through the same situation. Who's this? Sorry. Uma Ghosh. Okay, thank you so much, Uma ji. Thank you. Okay. Thank you, sir, for a wonderful workshop. Thank you, sir. Very helpful.